Good morning, students. Today I have a arrangement to videography. That videography which helps you to understand all the chapters which you feel hard. First of all, I am taking chapter 1 and 2. In this chapter, there are dimensions. डायमेंशंस को समझने में कुछ बच्चों को दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों की वजह से मैंने डिसाइड किया है कि एक वीडियो शॉर्ट वीडियो मैं आपको बना करके भेजूँगा विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट चैप्टर या दैट टॉपिक. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग डायमेंशंस फार्मूला. डायमेंशनल फार्मूला. डायमेंशन फार्मूला मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ कि क्या है. कि कोई भी फंडामेंटल यूनिट है, देयर आर 4 फंडामेंटल यूनिट विच इज मास विच इज डिनोटेड बाय m, लेंथ. वी कैन डिनोटेड बाय लेंथ इज कैपिटल L and other is time, t. These are the fundamental units and also the temperature. It will use somewhere, not a particular year. It will use in some area in which formula those have temperature, you will use the theta. Okay, now we will start what is the fundamental unit. Fundamental unit are mass, length, time and temperature. Now what is the dimension formula? Dimension formula will be the power of these fundamentals. अगर हम इन फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर पावर लगा दें तो वो हमारे डायमेंशन फार्मूला कहलाएगा. लेट आई एम स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक फार्मूला या बेसिक फॉर मेथड टू फाइंड आउट द डायमेंशन फार्मूला. First of all, I am taking area. Area, what is the formula of area? If you know the formula of any physical quantity, you can explain that physical quantity in the form of dimensions. Okay, area, which is length into width. Length into width, which is length denoted by L and width is also denoted by L. So both is multiplied and that will be L square. Similarly, volume. These are the fundamental formula. What will be volume? Length into breadth into height, which will be L into L into L is equal to L cube. That is the method to find out the dimension formula of area, which will be equal to L square. You will keep it in inverted comma
capital comma volume, that will be LQ. Similarly, speed, that will be speed. If you know what is the formula of speed, distance upon time. Speed, that will be distance is L upon time, T is equal to L T minus 1. ये T जो है जब ऊपर की साइड में चले जाएगा तो ये इन्वर्स पावर हो जाएगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। और सिमिलरली एक्सेलरेशन, क्या है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन change in velocity upon time, which will be equal to change in velocity is v, the dimension of v is L t power minus 1 upon t, और इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये L t की पावर माइनस 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पावर ये t की पावर माइनस 1 इंटू टी की पावर जब ये ऊपर जा करके टी की पावर माइनस 1 हो जाएगी, और ये दोनों मिल करके आपको टी की पावर माइनस 2 हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई होने पर जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ फोर्स, देन यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, which is denoted by F. F is equal to ma. If you know F is equal to ma, that will be easy to find out, which will be m, the dimension formula is m. A is acceleration, is L t की power minus 2, L t to the power minus 2, हमने इसको L t की power minus 2, that will be the dimension of force. There are so many formulas, for example density, momentum and kinetic energy, potential energy and so on. Okay, I will find out more than these quantity, 1 2 3 4 5 and number 6 on next page.